हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण माने समस्त को सरती स्वागत। आमे टे आमे जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करछन ता जो टेस्ट सीरीज पार्ट 2 रो टेस्ट 2 रो लास्ट रे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। ता देरे हमरो किछि क्वेश्चन दीटा तीनटा क्वेश्चन भूल हेतला। मो जाके मो भूल आंसर कहितली, जो ताको बर्तमान आगे रेक्टिफाई करनवा तापर आमे आगु बढ़िबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रे 13 रे कोन कहूची एतर मैक्सिमम नंबर रहइबो 200 जोटा कि मु कोन कहितली मु कहितली 50 कहितली। ओके, एटा किंतु एक्चुअल आंसर हो सी हो जोटा कि 200, जाकि हमरो सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट कहूची। सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट कहूची एटा रहइबो 200 रहइबो। आ गोटे क्वेश्चन थिला जोटा कि पेड अप कैपिटल ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर इट कैन कमेंस बिजनेस। माने बिफोर माने बिजनेस टा स्टार्ट होबा जस्ट पूर्वरु तापाई कोन केते केते पेड अप कैपिटल दरकार बोली थिला। जेमति कि एठी मु भूल कहितली जोटा कि रुपीस 10 लाख कहितली, जोटा कि एथरे को एक्चुअली जेते भी एथरे ऑप्शन अछि आ भितर कोटा भी ठीक नो। अब सब जाक ऑप्शन ही भूल अछि ता भितर। तेनु के कारण मिनिमम पे इज अकॉर्डिंग टू हमरो कंपनीज एक्ट 2013 रो मिनिमम पेड अप कैपिटल को कोन कर दिया छी, जीरो कर दिया छी। कोन कर दिया छी, जीरो कर दिया छी। ओके, कमर्शियल बिजनेस में जीरो कर दिया छी। तापर जेते बेले कंपनी स्टार्ट हो तार ऑथराइज्ड कैपिटल आसीबो। ऑथराइज्ड कैपिटल पर से शेयर इश्यू करिवो। इश्यू कला पर तार तापय मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल दरकार। मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल दरकार 1 लाख दरकार। ऑथराइज्ड कैपिटल मिनिमम 1 लाख हला पर से ताको कोन करि परिबो, पेड अप पय अप्लाई प्रोस्पेक्टस इश्यू कर परिबो। ओके, एटा ताने एक्चुअली हमर आंसर जो अछि आदर जो चारटा ऑप्शन अछि, चारटा ऑप्शन कोटा भी आ भितर ठीक नै। ए जो 1 लाख अछि 1 लाख पेड अप कैपिटल पे हबो नै, 1 लाख टा हबो सब ऑथराइज्ड कैपिटल पे हबो। कोन हबो, ऑथराइज्ड कैपिटल हबो। ए जो एटा कहा अनुसार होछि हमर कंपनी एक्ट 2013 has removed the requirement of minimum paid up capital for public company in order to make easier to startup and small business to incorporate and commence their operation. ओके, एबे हमर जो दीटा भूल थिला ता करेक्शन कर देले तापर हमरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो स्टार्ट करिबा आजिरो क्वेश्चन। इथे रहइबो व्हाट इज द measure of a central tendency that represents the middle value in that data set when it is arranged in the ascending order। ascending order कथा कहला कोन कहला measure of central tendency presents middle value in the data set। middle value of in the data set रहला it is arranged in ascending order। जेतरा हम ascending order ताको सजेबा ताने हमर कोटा आसीबो। फर्स्ट हमर कोन आंसर हबो, एथे देछि मीन देछि, मीडियन देछि, मोड देछि, रेंज देछि। आ भितर कोटा आसीबो कहि परियो के हमर आसीबो फर्स्ट आसीबो मीडियन आसीबो। ओके, रिप्रेजेंट डाटा को रिप्रेजेंट करिवो, डाटा को रिप्रेजेंट करिवो से हबो मीडियन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट्स मिडिल वैल्यू। आ भितर मिडिल वैल्यू को के रिप्रेजेंट करछि जेतला हम मीडियन भी कैलकुलेशन करंती से डायरेक्ट हम मिडिल वैल्यू को ही नैतान। जेतबेले जेतरा कोन इवन नंबर रे थिबो मिडिल रो जो दीटा वैल्यू अछि ताको डिवाइड करके 2 रे ता मझिरा जा भारियो सेटा को नैतांती, किबा जति ऑड नंबर अछि ताकर जेला मिडिल वैल्यू भारियो सेटा हम नैतांती। मोड हला हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट रिपीट जोटा हेतिबो। आ मीन ऑल को मिसे की नंबर ऑफ आइटम को डिवाइड करी जा भारियो हमर सेटा को आंसर तर। रेंज हला कोन, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को माइनस करी तमे कोन करथानी बाहर करथानी। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉलोइंग इज द ट्रू, आ भितर ट्रू कोटा जोटा कि मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हे परियो कोटा आज प्रूव करछि। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन।
It is calculated by summing all variables dividing by the number of values. It is always equal to median. कौन हबो कहला हमर आंसर हबो it is calculated by summing all values. It is calculated by summing all values dividing by the number of values. ओके এটা হবো आंसर सी हबो आंसर এই जो रहिला it is not affected by extreme value एथरे एक्सट्रीम वैल्यू रे ही अफेक्टेड हबो कारण आमे सब जांग वैल्यू को आमे नैतांती मीन जेतो कैलकुलेशन करतांती सीरीज रो जेते भी वेरिएबल्स अछंती जेते भी डाटा अछि सब जांग आमे ताको नैतांती ओके तापर रहिला जो बी आउ डी रे जो दिटा ऑप्शन देछि देखो इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे आमे मीडियन नैतांती आउ इट इज ऑलवेज मीडियन इट इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन नहीं नहीं के ये केबे मीडियन सहित बहुत मैक्सिमम बहुत कम समय रे से समान होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट कथा कहिछि परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मेजर ऑफ अ सेंटर टेंडेंसी कोइंसाइड विथ द मीन एंड मीडियन मझिरे कोटा रहइबो ऑब्वियसली मोड ही रहइबो ना कोटा रहइबो नहीं मी मोड रहइबोने एटा से लेखि रै जो मीन एंड मीडियन लेखि जो बोली मोड रहइबो ना को नहीं हमर रहइबो मीन ही रहइबो ओके कोन रहइबो मीन ही रहइबो मझिरे के रहइबो मीन ही रहइबो ओके तापरे आ रेंज ता भीतर आसु नहीं मीन मीडियन मोड भीतर हमें कोन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार करतांती तेनु जेतर परफेक्ट हबो त मीन आसीबो तार सेंट्रल टेंडेंसी तो नेक्स्ट देखिबा व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यू दरे की अफेक्ट होची के बेसिकली अफेक्ट हबो मीन हबो ना मीडियन हबो मोड हबो ना स्टैंडर्ड डेविएशन को वैल्यू मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू देखो मीडियन मीन ही हबो आंसर हमरो मीन ही हबो आंसर कारण ई ऊपर क्वेश्चन ही जाई ऑलरेडी मीडियन टा होची कोन मीडियन टा मिडिल वैल्यू हम नहीं थाते मोड हला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आ स्टैंडर्ड डेविएशन तो नो छाड़ो ओके तापर नेक्स्ट देखो in a binomial distribution how many modes are present in a binomial distribution how many modes are present ए जो 4 नंबर क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड डेविएशन कोन पाई हबने स्टैंडर्ड डेविएशन ता मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भीतर आसुने किंतु से मोस्टली इन्फ्लुएंस भी होची ओके एटा सो कोतरे डिस्पर्शन राशि होतवे in a binomial distribution how many modes are present 1 2 3 4 3 नॉन कोट आव आंसर हमर आंसर हबो 2 बाइनोमियल ले बाई कहिछि बाई माने 2 ओके बाई माने 2 2 मॉडल रहितबो जोथरे सेटा को हम कहबा 2 कहबा ओके व्हाट डज द मोड रिप्रेजेंट्स इन डाटा सेट मोड को रिप्रेजेंट करता है डाटा सेट रे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू द एवरेज वैल्यू द मिडिल वैल्यू द हाईएस्ट वैल्यू कोटा हबो आंसर हबो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ओके हाँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा if the mean and median of a data set are equal what can you infer about the distribution कोन कहला मीन और मीडियन ऑफ डाटा सेट इक्वल हेतिबो मीन और डाटा सेट हेतिबो इक्वल हेतिबो कोन हेतिबो इक्वल हेतिबो व्हाट कैन यू इन्फर about the distribution कोन हबो the distribution is positively skewed the distribution is negatively skewed the distribution is perfectly symmetrical the distribution is binomial कोन हबो हमर आंसर हबो द डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल ओके कारण दीटा डाटा सेट ता कोन हेछि समान हेछि जेतु डाटा सेट दीटा समान हेछि तेनु करी हमर कोन हबो डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल नेक्स्ट देखो व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट फॉर नॉमिनल डाटा पे आ भितर कोटा एप्रोप्रिएट हेता है मीन हेता है ना मीडियन मोड ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमर आंसर हबो सी मोड होची नॉमिनल डाटा पे बेसिकली हमर आवश्यक हेता है ओके नॉमिनल डाटा पे हमर कोन आवश्यक हेता है स्टैंडर्ड मोड हम बेसिकली यूज करता है नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन आ भितर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन नो केतरा मेथड अछि जानिथिबे जो मेथड जा मेथड अछि कमेंट करो रेंज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंटरक्वार्टल रेंज मीन डेविएशन आंसर कोन होबो हमर मीन डेविएशन होबो आंसर देखो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कोडा
absolute dispersion mean deviation एइथ पे कहा जाए कारण आर जेते भी आउटलायर अछंती आ मिडिल वैल्यू अछंती इनर वैल्यू अछंती सब वैल्यू गुडाक मीन डेविएशन को अफेक्ट करथांती हमें कैलकुलेशन कला बेले सब किछि अफेक्ट करथांती ओके तेनु करी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ता कहा जाए ओके तापर नेक्स्ट देखो इफ द रेंज ऑफ अ डाटा सेट इज लार्ज व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ अ डाटा कौन सजेस्ट करता है low dispersion, high dispersion, perfectly symmetric, and no no dispersion. कोड हवा आंसर ताले हमार आंसर हवा हाई डिस्पर्शन हवा ओके कौन हवा आंसर हाई डिस्पर्शन कारण हाई डिस्पर्शन एथपई हवा कारण बहुत लार्ज सेट हो जाउची एठी तार जो रिजल्ट आसीबो एते अधिका बायस ही के आसीबो ओके कौन आसीबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेंज बाय मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मीन बाय रेंज कोड हवा आंसर व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेटिंग वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एटा होची कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माने जो स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉरी मीन डेविएशन को से कोन करछि सॉरी मीन डेविएशन कर दिल स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक अछि स्टैंडर्ड डेविएशन को से कोन करबो तार तो कोएफिशिएंट बाहर को स्टैंडर्ड डेविएशन ही जो कोएफिशिएंट बारते ताको हम कोन कहतांती कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओके हमर जो अलगा सब रेंज अछि रेंज रो इंटरक्वार्टल रेंज अछि रेंज रो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अछि आउ किंतु हमर वेरिएशन डेविएशन रो स्टैंडर्ड डेविएशन कोन अछि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अछि ओके ता तेनु कर हमर आंसर हे जो बी हे जो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन ओके इडी ता फॉलो करि होबने नेक्स्ट देखो which measure of dispersion is affected by extreme value of outlier is data set range interquartile range standard deviation coefficient of variation कौन होगा आंसर होगा सी स्टैंडर्ड डेविएशन ओके स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्टली आउटलायर द्वारा से कहता माने ताको अफेक्टेड होता है what is the range of a data set a the difference between the median and mean the difference between the maximum and minimum value the difference between the first and third quartile the ratio of the standard deviation to the mean कौन होगा आंसर कौन होगा आंसर होगा हमरो बी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इजी दिन सडा आराम से ही परियो किछ नै इट इफ द इंटरक्वार्टल रेंज इज स्मॉल व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ मिडिल 50% ऑफ डाटा कौन देखबा लो डिस्पर्शन हाई डिस्पर्शन नो डिस्पर्शन परफेक्टली सिमेट्रिक हमारा आंसर से आसीबो लो डिस्पर्शन देखबा ओके कौन होगा आंसर लो डिस्पर्शन इफ द इंटरक्वार्टल रेंज इज स्मॉल अच्छी फिर फास्ट 50 टा ऊपर कौन देखबो डिस्पर हम जदी इंडिकेट देखबो तार मिडिल वैल्यू को लेकी ताने कम भारियो से लो डिस्पर्शन आसीबो नेक्स्ट देखो व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन which measure of a dispersion is based on the idea of average deviation from mean नु कोटा average बाहर कर जाए range interquartile range mean deviation standard deviation आंसर सिंपल आंसर अब से mean deviation जेतु mean को ता पचारछि mean नु कोटा कैलकुलेशन करा जिवो standard mean deviation ही कैलकुलेशन करा जिवो नेक्स्ट देखो what is the main advantage of using interquartile range as a measure of a dispersion it is easy to calculate it is not affected by extreme value it is always equal to range it is equivalent to the standard deviation कौन हवा आंसर हबो it is not affected by extreme value okay it is not affected by extreme value आंसर है जो the main advantage interquartile range केतेबेले भी से extreme value द्वारा affected हे नथा ओके नेक्स्ट देखो एटा हेला दीटा ये सरला आगोटे पडियो एटा थर्डटा व्हाट डज ईओक्यू स्टैंड्स फॉर ईओक्यू हम कोन जानचंदी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तामने एटरे किछि दरकार नै इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेकंड हमर आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हाट डज द फॉलोइंग कॉस्ट इज कंसीडर्ड इन ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट ऑल ऑफ द आंसर अब कोन सॉरी शॉर्टेज कॉस्ट ऑल ऑफ द ओके कोन हबो को कॉस्ट आस्ते है ऑर्डरिंग कॉस्ट आस्ते है होल्डिंग कॉस्ट शॉर्टेज कॉस्ट ऑल ऑफ द आसीबो इन द ईओक्यू फार्मूला व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर डी फॉर कोन डिमांड इन यूनिट्स कोन आसीबोटा डिमांड इन यूनिट्स आसीबो ओके डिस्काउंट नो होल्डिंग नो ऑर्डर नो कोन आसीबो डिमांड इन यूनिट आसीबो
What does the main objective of determine the economic order quantity? ଆମେ କ'ଣ ଆମର objective କ'ଣ ଅଛି ଆଦେହରେ? Objective minimizing ordering cost, minimizing holding, minimizing total inventory cost, maximizing product. କ'ଣ ଆସିବ ଆମର answer? Answer ଆସିବ minimizing total inventory cost. ଆମେ total inventory cost ଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ EOQ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 5 number, what happen to EOQ if ordering cost is increase? EOQ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? EOQ increase ହେଇଯିବ, EOQ decrease ହେଇଯିବ, EOQ remains unchanged, EOQ not affected by ordering cost. ଏଟା ହବ answer, EOQ decrease ହେଇଯିବ। ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? EOQ decrease ହେଇଯିବ। EOQ is ordering cost if increase, and what happen to EOQ if ordering cost is increase? Decrease କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଆମର decrease ହବ। ଓକେ, next ଦେଖିବା, which factor is inversely related to EOQ? Which factor is inversely related to EOQ in the EOQ model? Holding cost per unit, demand rate, order cost, lead time. କ'ଣ ମାନେ ଆସିବ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଅର୍ଡର କଷ୍ଟ ଆସିବ। କ'ଣ ଆସିବ? ଅର୍ଡର କଷ୍ଟ ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। Which factor inversely related to EOQ in the EOQ model? Holding cost, demand rate, order cost, lead time. ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ order time. Next ଦେଖ, what assumption is made about demand in EOQ? assumption ଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ତାର assumption କ'ଣ ରହୁଛି? is made to about demand in EOQ. Constant demand, fluctuating demand, increasing demand, random demand. କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ଆସିବ constant demand. ଓକେ, ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ବାଇ ପିରିୟଡ଼ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ଇୟରରେ ଚାରିଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଥଲି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଡର ହୋଇଥାଏ। If the carrying cost per unit increases, what happen to the EOQ? Carrying cost ଯଦି increase ହୁଏ, यूनिट कॉस्ट कौन हो इनक्रीज होके कौन हम EOQ इनक्रीज हम EOQ डिक्रीज हम EOQ रिमेन्स अनचेंज्ड EOQ बिकम इनफाइनाइट कौन हम एटा आसीबो EOQ डिक्रीज हेजिबो कौन हेजिबो सेम जिंस EOQ कौन हम डिक्रीज हेजिबो ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन कहला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आइला इनकम टैक्स आसला which of the following is an assumption regarding nature of the asset in capital gain taxation? Which of the following is an assumption of regarding nature of asset in the capital gain taxation? देखो the asset must be movable, the asset must be immovable, the asset must be tangible, the asset must be financial instrument. कौन हवा दरकार? এটা হচ্ছে asset must be tangible হওয়া দরকার কোন হওয়া দরকার asset must be tangible হওয়া দরকার সে মুভেবল হও অবা ইমুভেবল হও মুভেবল এনে চলিবো ইমুভেবল এনে চলিবো তা সହିତ কোন হওয়া দরকার সে must be assumption first assumption কোন কହୁଛି সে কোন tangible হইতবা দরকার তারপর দুই নম্বর কোন কହୁଛି what is the assumption regarding the holding period what is the assumption regarding the holding period for an asset to be considered for the capital gain holding period कथा पचारछि देखो no holding period requirement holding period at least 6 months holding period at least 1 year holding period at least 3 year कोटा आंसर हवा हमर holding period at least 1 year हवा दरकार holding period केता हवा दरकार holding period at least 1 year हवा दरकार ओके the assumption regarding the holding period for an asset to be considered for capital gain केते नहीं पारे दरकार 1 year ही पारे दरकार तापर नेक्स्ट देखो in capital gain taxation what is assumed about the mode of acquisition of asset acquisition जत होते acquisition asset जत हम acquisition करंती tax ता पई capital gain कोन taxation अछि acquisition through gift only acquisition through purchase only acquisition through any legal means acquisition through inherently only हबो कोन हबो आंसर हबो सी acquisition through any legal means रे हितवा दरकार acquisition जतरा हम करछंती ताको नि legal means भीतर हबा दरकार तापर होची which of the following is an assumption related to the taxation of a short term capital gain taxation to short term capital gain कहला ओके STCG the tax exemption for short term capital gain tax exemption for short term capital gain
different tax rate for the short term and the long term tax gains. Taxation of short term gains are a regular income. Taxation of short term gain as a business income. कौन हवा आमर आसीबो आंसर टैक्सेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गेन एज ए रेगुलर इनकम हम कहबो टैक्सेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गेन एज ए रेगुलर इनकम एटा रेगुलर इनकम भीतर छ लॉन्ग टर्म हेने एटा कोन जीवा शॉर्ट टर्म भीतर छ नेक्स्ट रे assumption of other source what is the assumption of regarding the regulatory sorry regularity of income in category of income from other source regularity कथा पचाला regularity of income in the category of income from other source irregular income only both regular and irregular income from employment only कोटा हो आंसर हमारा एटा हमर आंसर आसीबो सी बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर इनकम्स हमर कोरा आसीबो बोथ रेगुलर हो किबा इरेगुलर हो जदि अलगा आपन कोनोसी आसेसी रो अलगा पर डाटार डायरेक्ट इनकम किछ अलगा रहउची ता पई जदि आउ किछ अलगा इनकम एक्स्ट्रा इनकम से करते से एक्स्ट्रा इनकम ता रेगुलर बेसिस रो हो किबा इरेगुलर बेसिस रो ता पई कोन हिजबो ता पई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हिजबो इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स व्हाट इज अज्यूम्ड अबाउट द नेचर ऑफ अ रिसिप्ट नेचर ऑफ रिसिप्ट ता कोन हबो आ भीतर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रे एटा को वे रे आसीबो कोन कहूची ऑल रिसिप्ट आर टैक्सेबल ओनली गिफ्ट आर टैक्सेबल ओनली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर टैक्सेबल सम रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल सम आर एग्जेम्प्ट ओके कोन हबो हमर आंसर आसीबो डी आसीबो सम रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल सम आर द एग्जेम्प्ट नेक्स्ट देखो what is assumed about the source of income in the category of income from other source only business related to income only investment related to income any source of income not covered by the specific head only agriculture income कौन आसीबो हमर आंसर आसीबो any source of income not covered by specific head जो हमर जो पूर्व चारटांग हेड अछि से चारटांग हेड भीतर जदी हमर कवर न होईची बळी पड़ची सेटा आसीबो कोथरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आसीबो पांचटांग हेड हमर कोन इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन उल्टा कह देन बिजनेस प्रोफेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओके in income from other source what is assumption regarding expenses related to the income from what is the assumption regarding expenses कथा कहला expenses ऊपर कोन रोचे कोन कहला expenses are not considered only business related expenses are considered only personal expenses are considered all expenses are deductible कोन अछि आंसर अछि ए expenses are not considered expenses are considered एथरे other source रे considered होय नै ओके नेक्स्ट देखबा which type of audit एटा auditing question आसला which type of audit is conducted by an internal auditor who is an employee of a company external auditor internal audit statutory audit forensic audit कोड आसीबो आंसर आसीबो बी इंटरनल ऑडिट कोन आसीबो हमर आंसर इंटरनल ऑडिट कोन छै ऑलरेडी लेखा छै इंटरनल ऑडिटर जदी से कंपनी एम्प्लॉय हेते तामे कोन हेटा इंटरनल ऑडिट ही आसीबो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल ऑडिट डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर ensuring compliance with the tax regulation expressing an opinion on financial statement investigating financial discrepancy it is asibo कोटा asibo answer asibo expressing an opinion on financial statement कौन तक मिलता है expressing on finance opinion on the financial statement primary objective of financial auditor काम main objective कौन primary expressing opinion financial statement हवा देखो 3 नंबर which type of audit is performed to assess the efficiency and effectiveness of an organization's operation आंसर is internal audit हबो ना मैनेजमेंट ऑडिट हबो स्टैट्यूटरी ऑडिट ना फोरेंसिक ऑडिट कोटा आसीबो आंसर आसीबो हमरो आंसर आसीबो कोन मैनेजमेंट ऑडिट कोन हबो मैनेजमेंट ऑडिट कोन हबो मैनेजमेंट ऑडिट हबो आंसर which type of audit performed assess to efficiency and effectiveness of an organization efficiency and effectiveness of an organization's operation टा कोथरे चेक करा जाय हमरो मैनेजमेंट ऑडिट रे चेक करा जाय नेक्स्ट देखो in which type of audit does not auditor
does an auditor in which type of audit does an auditor express an opinion on the truth and fairness of a financial statement? Internal, external, compliance, performance. What habo? Answer habo performance audit. Sorry external audit. परफॉर्मेंस ऑडिट बोले कहते कौन हम एक्सटर्नल ऑडिटर हम एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है फ्री ओपिनियन मिलता है जहाँ भी आमर से चेक कला जो सी ऑडिट कला ऑडिट कला जहाँ भी पाइला से ओपनली कौन कहीपर स्टेटमेंट दे पार से कौन कहीपर ओपनली से स्टेटमेंट दे पार ट्रुथ और फेयरनेस दरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कौन किए दे पार एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर भी दवा आवश्यक ना Next, देखो what is the focus of a company compliance audit? What is the focus of a compliance audit? कौन कौन assessing financial statement, evaluating operational efficiency, ensuring adherence to law and regulation, detecting fraudulent activities. Our answer is C, ensuring adherence to law and regulation. Focus of compliance compliance audit को area focus करिवो ensuring adherence to law and regulation हितवा दरकार. तब नेक्स्ट है which audit specifically designed to investigate suspected fraud and financial irregulation. कौन कहला which audit is specifically designed to investigate suspected fraud and financial irregularities? Internal, forensic, management, external. कौन आंसर आसीबो एटा बी एटा फोरेंसिक ऑडिट हमर कोन करा जाय इन्वेस्टिगेट करा जाय फ्रॉड आउ फाइनेंशियल इरेगुलारिटी फ्रॉड आउ फाइनेंशियल इरेगुलारिटी को ऑडिट हमर आसीबो फोरेंसिक ऑडिट आसीबो. नेक्स्ट 7 नंबर what is the purpose of a tax audit? Ensuring compliance with tax law, evaluating management performance, detecting internal fraud, assessing financial risk. कौन हम हमारा आंसर आसीबो ensuring compliance with tax law. कौन ensuring compliance with tax law. What is the purpose of tax audit? Tax audit purpose कौन ensuring compliance with tax law. Which type of audit is conducted as per the requirement of a specific statute of law or law? Conduct or of as per the requirement of a specific audit, specific statute and law. कौन बदकर external, internal, statutory, concurrent. कोटा हो answer हो C, statutory audit. Okay. Now, which type of audit conducted as per the requirement of a specific statute and law? एटा कौन कहबा statutory audit को आजिबा. नेक्स्ट देखिबा ए पार्टटा करी रखिबा. What is the destination of principle in the context of GST? GST रो destination कथा पचाला. Destination principle in the context of GST. Tax is levied at the point of origin. Tax is levied at the point of consumption. Tax is levied at the point of production. Tax is levied at the point of import. कौन होगा आंसर? आंसर होगा answer above B, tax is levied at a point of consumption. Okay. कौन होगा tax is levied at the point of consumption. जो आम consumption कले आम GST दबा. Under GST system, which of the following method is used to calculate tax on the value added at the each stage of production? Input tax credit method, subtraction method, addition method, value addition method or value addition. Quote have answer under GST system. Which of the following method is used to calculate tax on the value added at each stage of a production? Answer आसीबो value addition method. कौन आसीबो value addition method आसीबो. Okay. Next देखिबा in the GST system, what is the significance of integrated goods and services tax? Okay. IGST रो कौन सिग्निफिकेंस रही आईजीएसटी रो कौन सिग्निफिकेंस रही हमको से पता सिग्निफिकेंस ऑफ आईजीएसटी. इट इज लेविड ऑन द इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज ए स्टेट लेवल टैक्स. इट इज इम्पोज्ड ऑन द import of goods and services. It is a local tax within a state. कौन है आंसर एटा फर्स्ट आसीबो इट इज द लेविड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज. कौन इंटरस्टेट कोड आसीबो हमरो इंटरस्टेट आसीबो. ओके कारण आईजीएसटी माने को इंटरस्टेट आसीबो इंटरस्टेट जीएसटी
जोटा कि इंटरेस्टेड आसीबो इट इज लेविड ऑन द इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तापर देखो which GST method allow business to claim a credit for the tax paid on their purchase and expenses central GST state GST integrated GST input tax credit कोटा आसीबो आंसर आसीबो आंसर आसीबो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जोटा कोन आसीबो आईटीसी आसीबो इनपुट क्रेडिट इनपुट टैक्स सॉरी सब होला कोन आसीबो आंसर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आसीबो आंसर which GST method allow business to claim a credit for the tax paid on their purchase and expenses এটা आसीबो कोन इनपुट टैक्स क्रेडिट आसीबो 5 नंबर देखबो अंडर द जीएसटी regime what is the purpose of a reserve charge mechanism reserve charge mechanism RCM रो कोन पर्पस रहिछि business pay tax only on their output receipt of goods and services paid tax on behalf of the supplier tax is calculated based on the value of added at the each stage business are exempt from paying tax on the input हमर आंसर आसीबो receipt of goods and services pay out to paid tax on the behalf of a supplier okay on behalf of a supplier under GST regime what is the purpose of a reserve charge mechanism RCM रे कोन applicability रहउची recipient of goods and services pay out to tax on behalf of the supplier okay next देखिबा which GST method follows the principle of taxing the final consumer at the point of sale which GST method follows the principle of taxing the final consumer at the point of sale कोन कहउची destination based method GST आमे जानि छथि एटा होची destination based method तामने एटा हिजो आंसर ना origin ओके एटा हिजो आंसर हमरो किंतु ऑप्शन देखि दियो origin based value based input tax credit method किंतु आमे जानि छथि GST होची कोन destination based final consumer ही final GST एटा पेड करिवो तेड करी एटा आसीबा हम कोन destination based method okay next is the 7 number what is the role of a goods and service tax network GSTN in the GST system GSTN ର कोन रोल रहउची enforcing GST regulation origin based GST value added GST input tax credit method कोन आसीबा आंसर value added GST आसीबा कोन आसीबा value added GST आसीबा सॉरी भूल कहले एटा कोन कहले enforcing GST regulation collecting GST revenue providing an IT manufacturing infrastructure for GST implementation setting of a GST what is the role of a goods and service network in the GST system रो GSTN नो कोन रोल रहउची रोल रहउची जोटा कि collecting GST revenue नाही एटा नो providing an IT infrastructure for GST ओके एटा सीटा ही आंसर हबा कोन GSTN नो काम कोन रहउची से टैक्स IT infrastructure प्रोवाइड करउची फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST को कोन इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST को कोन प्रोवाइड करउची IT infrastructure माने जो ई नेटवर्किंग जोटा से प्रोवाइड करउची नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ अ कंपोजिशन स्कीम which of the following is a composition scheme under the GST could have answer applicable to the large business simplified compliance for small business allows unlimited input tax credit impose higher tax rates हमर आंसर आसीबो simplified compliance for small business ओके आज वीडियो रे एडी क्वेश्चन हम सारिबा आ जो बाकी जो क्वेश्चन अछि सब एरा आको आज हबो ता गोटे वीडियो करबा नहले आपण माने ताकू निजे सॉल्व करू कारण मु सब ग्रुप रे अलग अलग पार्ट करी ताकू मेंशन करी छी अलग कारण आपण मानको को लास्ट देखिया को असुविधा हबो गोटे जणे पिला मते फोन करी कहले कि से देखंतु ए जो क्वेश्चन रा पूरा लास्ट आंसर रहला हमको
ତାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଓକେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେପର୍ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାହାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ ବି କରିପାରିବା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।